people, it is 1 a.m. in the morning right now, and to feel dopaminergic or to feel some kick in life, I'm going to give myself one target, or I can say I will give myself one game, and that is in every 1 hour I have to speak on one topic for 1 minute. And apart from doing the work I am doing right now, I will take some time out from that 1 hour, going to read that topic and going to record it for 1 minute, so that I feel a little more productive, a little more good. So you might enjoy this vlog today because I am feeling great thinking about it only. So practical करके तो कितना ही मज़ा आएगा. Well, it is 1 a.m. right now, and I'll meet you at 2 a.m. with some good topic. So in this 1 hour, I have studied about the ventilation settings in the patient of ARDS. What is ARDS basically? It is your pulmonary edema with non-cardiogenic cause, which leads to hypoxia, leads to dyspnea, and leads to decreased compliance in the patient. The most important causes are sepsis, pancreatitis, pneumonia, your respiration of the gastric contents. And further, what are the ventilation settings in the patient of ARDS? We have to keep low tidal volume because high tidal volume can rupture the alveoli. We have to keep the pronic position of the patient. IE ratio should be inverse, that means inspiration should be more than expiration. There can be permissive hypercapnia. We have to maintain PEEP in the patient, and there can be high frequency ventilation. So I also studied about PaO2 FiO2 ratio we see in the patient of ARDS. हम ABG में देखते हैं PaO2 and FiO2 हम देखते हैं वेंटिलेटर पर जिसकी स्क्रीन होती है, एंड उसकी रेशियो अगर मोर देन 400 है, that means everything is good, there is no ARDS. But अगर उसकी रेशियो is less than 400, there is mild ARDS. If it is less than 300, there is moderate ARDS. If it is less than 250, it is severe ARDS. And if it is less than 200, it is critically ill patient with the respiratory failure of ARDS. So this is the staging. What we get in chest X-ray of the ARDS patient, we get the bilateral infiltrates, and further what is the pathogenesis of the patient of ARDS? Alveoli rupture हो जाता है. It can be direct cause, it can be indirect cause. उसके बाद इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं. न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं फर्दर टॉक्सिक कंपाउंड्स को जो एंडोथीलियम को डैमेज कर देते हैं. वो फर्दर जो डैमेज कर देंगे एंडोथीलियम को, फर्दर एपिथीलियम भी डैमेज हो जाती है, एंड इट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ लंग बिकॉज एयर इज रिप्लेस्ड बाय फ्लूइड इन द alveoli. So this is all about ARDS. I have gathered in the last 1 hour and enjoyed. प्लस मैं अपना दूसरा काम भी कर रही थी जो मुझे करना था. बाय बाय. Atelectasis, and further you have to see that if it is shifting to the left side, it is your obstructive lung disease. If it is shifting to the right side, it is your restrictive lung disease. So it was really fun to learn all these things. That's all. I'll go to sleep now, but before that I will discuss one chest X-ray that is of pneumonia, which I have studied. It is also known as consolidation of lung, and how we define the chest X-ray. Just let's talk something very basic. Chest X-ray देखते हैं, पहले बताते हैं कि चेस्ट का है, एब्डोमेन का है, पेल्विस का है. सेकेंड थिंग वी टेल व्यू ऑफ द एक्सरे कि AP व्यू है, PA व्यू है. तीसरी चीज़ हम बताते हैं सॉफ्ट टिश्यू या रिब केज इंटैक्ट है कि नहीं है, कोई फ्रैक्चर है तो वो डिस्प्ले करते हैं. फोर्थ चीज़ हम बताते हैं अबाउट द एक्सपोजर ऑफ द फिल्म कि इट इज़ एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, ओवर एक्सपोज या नॉर्मल है. वो कैसे देखते हैं? अगर हमें वर्टिब्रा सिर्फ T4 तक दिख रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल. अगर T4 से कम दिख रहे हैं, इट इज़ अंडर एक्सपोज. अगर हमें T4 से ज़्यादा दिख रहे हैं, इट इज़ ओवर एक्सपोज. देन वी कमेंट अबाउट द फिल्म की इंस्पिरेशन पे ली गई है या एक्सपिरेशन पे ली गई है. अगर हमें एंटीरियर रिब्स मोर देन 8 दिख रहे हैं, देन इट इज़ योर एक्सपिरेशन फिल्म. इफ़ इट इज़ लेस देन 8, इज़ योर इंस्पिरेशन फिल्म. फिर हम कमेंट करते हैं अबाउट द एंगल्स, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे. उसमें ब्लंटिंग है या शार्प हैं, कैसे हैं, और उससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं प्लूरल एफ्यूजन का, हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स वगैरह का.
फर्दर हम कमेंट करते हैं अबाउट योर हार्ट कार्डियक, मतलब हम गैली है कि नहीं है, CT रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड फिर हम ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स देख सकते हैं. बट निमोनिया में हम कैसे देखते हैं? निमोनिया में हम देखते हैं कि देयर इज़ सम कंसोलिडेशन, there is some homogeneous opacity, might be in upper zone, middle zone or lower zone of the lung. Further, we can see the air bronchogram, which is the specific finding in the patient of pneumonia chest x-ray. Now what is air bronchogram? Bronchus is something which contains air. When there is homogeneous opacity, वो white color की होगी, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्कैटर्ड लाइंस होंगी, विच इज़ कॉल्ड एज एयर ब्रोंकोग्राम. एंड योर homogeneous opacity, which is white in color, will become the background and there will be black scattered lines, क्योंकि एयर अलग से जनरली नहीं दिखती है. अगर ओपेसिटी है तो इट इज़ ओपेसिटी. एंड इन what all are the differential diagnoses in which we can find the air bronchogram? One is your consolidation of lung, that is pneumonia, which I have told. Other is your alveolar cell carcinoma. Other is your hyaline membrane disease. Yeah, so this is all for the day. I hope you also have enjoyed the vlog. You also have enjoyed the idea which I pick up to feel dopaminergic, to feel a kick in life apart from learning some case here. That's all. Dr. Muskan Bansal is signing off now.